Next is properties of electrostatics of conductors. मे भी शायद हमने पहले थोड़े बहुत किया भी हो, just for the sake of electrostatics of conductors. पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई चार्ज नहीं हो सकता, so there is no electric field inside any conductor. Electric field inside conductor is always zero. Electric field always start from the surface of conductor. No electric field inside the conductor. कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है. सेकेंड केस, second property, electric field always start from the surface, and on the surface of any conductor electric field is always given as sigma by epsilon naught. Electric field at the on the surface of is given as E is equal to sigma by epsilon naught n cap, where n cap is unit vector in normal direction, in unit vector normal to the surface. Normal का मतलब perpendicular to the surface, and sigma is surface charge density. Right. So inside the conductor it is always zero. Inside the conductor कोई electric field नहीं हो सकती because there is no charge. It always start from the surface and it is perpendicular to the surface. Now we have to prove that for any type of conductor. ये किया हमने क्लास में पहले. For any type of conductor, electric field is always perpendicular. ये हमने किया हुआ है पहले. Now we have to prove that for any shape of the surface, electric field on the surface of conductor or metal is always given as sigma by epsilon naught. इसको प्रूव करने के लिए मैं करते हैं, बहुत छोटा सा सिलेंडर लेता है, very small cylinder of cross section area A. This cylinder is like a small pill. एक पतला सा सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A. One side is inside, another is just outside. To prove this electric field as sigma by epsilon naught n cap, we consider a Gaussian surface. Consider a small pillbox type cylinder.
Consider a small cylinder of cross-section area A just on the surface of the conductor. Now, since inside electric field is always zero, electric flux will be coming out only from one side. Only from one of the surface, electric flux will come out, that is E into A, inside it is zero. So in this cylinder, electric flux is coming out from the right, from the outside only. Inside there is no field, so there is no flux. Apply Gauss theorem for this surface. The net flux is equal to total charge enclosed upon epsilon naught. Flux केवल एक साइड से बाहर आ रहा है E into A, and the surface, the charge that is inside, will be covered by this small area. So that will be sigma into A. E into A, that will be sigma into A by epsilon naught. E gone. Electric field on the surface of any conductor is sigma by epsilon naught. एक हमने छोटा सा सरफेस लिया है, वेरी स्मॉल सिलेंडर. इसका एक साइड का सरफेस, एक साइड क्रॉस सेक्शन is just outside the surface, just on the surface. Other part is just inside. But inside conductor की electric field zero होती है, so अंदर से कोई flux नहीं pass हो रहा है. Flux will be only from the outside surface, and the area and the charge that it encloses of the whole surface का A area इसके अंदर आएगा. So charge will become sigma into A. So we have proven that electric field on the surface of conductor is sigma by epsilon naught, and it is always perpendicular to the surface. Why it cannot be at any other angle? उसका हम लॉजिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर किसी एंगल पर होगा, so उस एंगल के वजह से एक कंपोनेंट आएगा along the parallel, and that component will keep on rotating the charge, and charge will never come to rest. So if charge doesn't come to rest, charge never come to rest means there must always be a current on the surface of a conductor, which is not true. There is no current on the surface of conductor all the time. Therefore, electric charge on the surface will be at rest, and the charge density is sigma. Electric field on the surface is sigma upon epsilon naught. If it is a positive charge, it is perpendicularly outwards. It is perpendicularly outwards. Right. पहली property थी, and inside the conductor electric field is zero. Second property is that on the surface of conductor electric field is sigma by epsilon naught, and direction is radially outward direction. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर सरफेस पे छोटा सा होल कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी. थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्मॉल होल. Small hole or cavity on the surface of a conductor. Electric field inside a small hole or cavity on the surface of conductor is given as sigma by 2 epsilon naught, where sigma is surface charge density, epsilon naught is
E is equal to sigma by 2 epsilon naught. ये अब हमें प्रूव भी करना है. किसी भी कंडक्टर जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, on the surface electric field is sigma by epsilon naught and inside electric field is 0. These two facts we know. थर्ड इज दैट अगर हमने सरफेस पे कोई कैविटी बना दी या होल बना दिया तो होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर और इसके सरफेस पे छोटा सा हमने होल कर दिया. द होल इन दैट दिस वाज अ स्मॉल सरफेस which has been removed from the overall bigger conductor surface. कंडक्टर के सरफेस से हमने ये छोटा सा चार्ज, छोटा सा पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया. Now we have to determine the electric field in this particular region because of the remaining charge. The charge density is sigma. We have to prove that electric field due to this is sigma by 2 epsilon naught. कैसे करेंगे हम? Suppose the electric field due to the remaining sheet is E1. और जब ये यहाँ पर चार्ज रखा हुआ था, when it was completely closed, the electric field due to that portion is E2. जितना पोर्शन यहाँ से हटाया था उस हटाए वाले पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है E2. So it can be assumed as this plus the removed portion. Assume electric field right. E1 is because of this removed portion. So इस portion की electric field है E1 बाहर की तरफ भी और ये अंदर की तरफ भी. And due to this remaining portion of the अंदर की तरफ भी आएगी E2. If we cover that hole, जितना हमने cavity बनाया, if we cover that hole by the removed surface. If we cover that hole, complete that hole, then it becomes total E1 plus E2 on the surface, and E1 minus E2 is inside the conductor. So we can apply the principle of superposition. दोनों को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो टोटल फील्ड हो गई सरफेस पे E1 प्लस E2 और अंदर की तरफ आ गई E1 माइनस E2. Inside the conductor E1 minus E2 is 0. Add the two. Solve for these two equations E1 and E2. E1 is equal to E2 and that becomes sigma by 2 epsilon naught.
So surface के अंदर और surface पे that electric field is sigma by 2 epsilon naught. Electric field due to the whole surface, electric field due to the electric field due to the removed portion is sigma by 2 epsilon naught. Electric field by the remaining whole portion is sigma by 2 epsilon naught. जितना उस छोटे से पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दी होल सरफेस उतना ही बचे वाले की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. स्मॉल पोर्शन व्हिच इज रिमूव्ड, electric field is sigma by 2 epsilon naught. The electric field by the remaining sheet is electric field by the remaining is again sigma by 2 epsilon naught. तो हमने ये प्रूव कर लिया दैट अगर हम किसी भी सरफेस में कंडक्टिंग सरफेस में अगर हम कोई कैविटी बना दें सरफेस पे, then in that cavity the electric field which is produced by the remaining charge which is E2 is equal to sigma by 2 epsilon naught. कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है अगर सिग्मा charge density, then the electric field in this charge density is sigma by 2 epsilon naught. ये हमें प्रूव करना था किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे अगर होल है, in that hole the electric field is sigma by 2 epsilon naught. Right. बेटा समझ आ रहा है क्या क्या होल के अंदर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. जैसे हमने पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली जब दोनों आपस में कंबाइंड थे, व्हेन देयर वाज नो होल, when there was no hole, so electric field inside this hole comes out sigma by 2 epsilon naught. Fourth property is that electric field on the surface, there is always electrostatic pressure on the surface of conductor. Yes. Yes, yes. Any doubt? Next is the electric field on the surface of the electrostatic pressure on the surface of conductor is electrostatic pressure on the surface of conductor is sigma square by 2 epsilon naught, where sigma is surface charge density. Right, so because there is a positive charge toward the surface, या positive या negative कैसा भी होगा, they will repel each other, and because of that, we have to prove that on the conductor surface there is an electrostatic pressure, and this electrostatic pressure is sigma square by 2 epsilon naught. Conductor की electrostatic कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो में कोई होल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड is sigma by 2 epsilon naught. Now these positive charges, they will be repelling each other. They will be repelling each other, and as a result, the pressure on the surface, that electrostatic pressure on the surface is sigma square by 2 epsilon naught. The electrostatic pressure on the surface is sigma square by 2 epsilon naught. ये हमें प्रूव करना है रेडियली अपवर्ड्स.
सो प्रेशर कैसे निकालेंगे, पहले फोर्स कैलकुलेट कर लें और एनी फोर्स पोर्शन एंड देन फोर्स अपॉन एरिया. So if we consider like a small surface on this conductor, जैसे ऊपर वाले से हमने कैलकुलेट किया, in this particular small surface पहले रिमूव कर दिया. Electric field in that cavity is sigma by 2 epsilon naught. When it is removed from the surface, वहाँ पर electric field आ जाएगी E2. So when that charge is placed, electric force on the small charge Q on the on the surface of conductor. पहले हमने उस पोर्शन को हटा के वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली. Now electric field in that particular surface will be a force F is equal to Q into E2. Force on that surface, force on that small charge that is considered there. Charge हो गया sigma into A और electric field is sigma by 2 epsilon naught. प्रेशर निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए. फोर्स निकालने के लिए पहले उस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए we consider a small surface. Remove that from the surface and then substitute. Calculate the electric field on that surface. Electric field on that surface inside that cavity is sigma by 2 epsilon naught. We already know. In that cavity, if we consider a small surface of area A, charge on that area becomes sigma into A. So the force per unit area becomes sigma square by 2 epsilon naught. Force per unit area is the pressure. So on the surface of any conductor, when there is a charge, the electrostatic pressure on its surface is sigma square by 2 epsilon naught. Whether it is a positive charge or negative charge, it will always be radially outwards. कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0. कंडक्टर में कोई कैविटी बना देंगे सरफेस में तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. Inside that cavity, if we assume the whole initial charge, then force will be charge into electric field Q into E. Q is sigma into A. So वहां से प्रेशर आ गया. किसी भी कंडक्टर की सरफेस सो बबल है, सो बबल पर अगर हम चार्ज देते हैं, in this soap bubble when it is charged, this soap bubble will have an radially outward pressure 4 due to the repulsive of these charges, and that is called electrostatic pressure. If the surface charge density is sigma, then the pressure will be electrostatic pressure will be sigma square by 2 epsilon naught, where sigma is surface charge density. और अगर हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो एक लिमिट के बाद ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो बबल फट जाता है. So if we have to calculate the maximum size, the maximum radius of bubble that can be formed, तो जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सेस प्रेशर को बैलेंस करता रहता है. कौन सा एक्सेस प्रेशर? जो सरफेस टेंशन की वजह से आएगा. So if you have to find the maximum size of bubble, maximum radius of bubble that can be formed. So bubble is conductor because of the minerals. When electrostatic pressure balances the excess pressure due to surface tension. ये आ गया sigma square by 2 epsilon naught, and this was 4T upon RT circumstance. By solving this, sigma को हम Q upon 4 pi R square लिख लेंगे, and we can solve this to calculate the amount, calculate the radius for which this bubble is just in equilibrium. इससे थोड़ा सा भी चार्ज अगर ज्यादा हुआ तो बबल का प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की तरफ जाता होगा, and bubble will get burst.
right? इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए. We saw the dipole, we saw the electric field of dipole, force between the dipole, when we saw the cavity, electric field inside the cavity of conductor, electric field inside the cavity of insulator, non-conductor. और हमने कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज कर ली. कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट irrespective of its shape. Electric field inside the cavity is sigma by 2 epsilon naught, and the electrostatic pressure on the surface of conductor is sigma square by 2 epsilon. Now your first chapter is completed, and all the questions from NCERT SL you can solve. All the questions from NCERT and SL now you can solve. ठीक है? Okay. Understood ये electrostatics वाला part, कंडक्टर वाला पार्ट. कंडक्टर के सरफेस की फील्ड हमने लास्ट क्लास में कुछ पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन वाले किए थे, कंसेंट्रिक शेल वाले किए थे और कैविटी वाले कॉन्सेप्ट किए. And now there will be some more concepts related to this with respect to potential. Potential and potential energy we'll be doing in the next chapter. Okay. हमने motion of charged particle in perpendicular field भी किया था शायद. Motion of charged particle perpendicular electric field में entry करते हैं, then it moves on a parabolic path. So now your first chapter is completed with all the concepts covered. You can check, you can solve the questions from NCERT first, and then SL Aurora, and then any other competitive book that you have. Next chapter is electrostatic potential and capacitance. Right. इसमें कोई डाउट किसी को ये कंडक्टर वाले पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में कुछ हो तो आराम से देख के पूछ लो. You can ask it again. हमने कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा होल किया था और उस होल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Small cavity on the surface, there is an electric field sigma by 2 epsilon naught. उस cavity में charge अगर हम assume कर लें, then the cavity there was no cavity. It has a force of is equal to Q into E. और वहां से force निकाल के force per unit area, that is sigma square by 2 epsilon naught. अब आते हैं potential and potential energy. So potential energy of any configuration, not just charge. Potential energy क्या होती है? किसी भी सिस्टम में उसके इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करते हैं उस सिस्टम को बनाने में या उस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने में. दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली फिर से पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? किसी भी सिस्टम को इंफिनिटी से चार्जेस लाके या पॉइंट वहां से लाके उस पोजीशन तक लाकर रखने में जितना हमें वर्क करना होता है to make that system is defined as potential energy. वैसे डिफिनेशन क्या थी पोटेंशियल एनर्जी की? द एनर्जी possessed by virtue of position, orientation और configuration. नाउ पोजीशन, ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन कब चेंज हो सकता है? जब हम किसी सिस्टम के इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें. जैसे यहाँ पर है दो चार्जेस, सो देयर आर two charges, suppose Q1 and Q2. Q1 and Q2 at a distance of R. अब ये charges अपने आप नहीं आना चाहते R distance पे because they are repelling each other. They will be repelling each other. So to keep them at a distance R from each other, हमें infinity से लाकर we have to do work, and that work then will be defined as electrostatic potential energy of the system. 2-point charges, so उस 2-point charge की energy, if there are multiple charges, then we have to add the total work done in bringing all the charges. In general, किसी भी system में जो potential energy का formula था, potential difference, potential energy is always negative of work done by the internal force, because it is always the work is done against the internal force of that system.
पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charges from infinity to their current position. The total amount of work done in bringing the charges from infinity to the current position. From infinity to their current position is defined as current position without an acceleration. ये हम एक्सलेट करके लाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी. विदाउट एन एक्सेलरेशन का मतलब हो गया विदाउट एनी वेलोसिटी. Without an acceleration, which is like without an velocity, is defined as potential energy of the system. Is defined as electrostatic potential energy of the system. तो इन्फिनिटी से चार्जेस को लाके उस पोजीशन तक रखने में जितना भी वर्क करना पड़ता है दैट वर्क विल बी डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो पहले वाले चार्ज लाने में Q1 को लेके आएंगे when there is no Q2, bring the first charge. Force लगाना पड़ेगा because there is no other charge other than no repulsive force, and we don't have to do any the work done bringing the second charge against the one is defined as W21. So potential energy of the system potential energy of Q1 Q2 distance of R. The potential energy of the system is infinity से start की current position तक आ रहे हैं F dot dr. F dot dr. F is K Q1 Q2 by R square. राइट साइड में भी पोटेंशियल आ गया पोटेंशियल करंट पोजीशन माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी. बिकॉज ये इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी. पोटेंशियल एट करंट पोजीशन माइनस पोटेंशियल व्हेन दे वर इनफाइनाइट अपार्ट. इसको राइट साइड में इंटीग्रेट करोगे तो k q1 q2 बाहर कॉमन 1 by r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by r आ जाएगा इनफिनिटी टू r. तो एक्चुअल फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल ऑफ करंट पोजीशन माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी इज k टाइम्स q1 q2 by r. ये आ गया एक्चुअल फॉर्मूला. अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इन्फिनिटी किसी ने देखा नहीं. इन्फिनिटी पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी नहीं पता. सो वी कैन अज्यूम safely that potential energy to be zero. Assuming that potential energy at infinity is zero. Assuming potential energy at infinity to be zero. Infinity potential energy zero हो जाएगी तो u infinity को zero put कर लेते हैं. And this potential will become k q1 q2 by r. Potential energy due to this system of the two charges. Potential energy becomes k times q1 q2 by r. Infinity potential energy zero है या नहीं है कोई जरूरी नहीं है. This formula of potential energy u is equal to k q1 q2 is zero only under the assumption that potential energy at infinity is zero.
Now, if both charges are positive or both charges are negative, then potential energy will be positive. If one positive, one negative, then potential energy will be negative. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि वर्क डन हमने नहीं किया, वर्क डन सिस्टम राइट। तो समझ आ रहा है रुद्र, सक्षम, अनुराग? यस सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जनरल फॉर्मूला है किसी भी सिस्टम के इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करता है, that work is stored in the form of potential। किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। सिमिलरली चार्जेस के केस में these two charges are repelling each other। हम उनको रिपल्शन के अगेंस्ट अगर पास लेके आ जाते हैं r डिस्टेंस पे, then the amount of work done is stored as in the form of potential energy। So potential energy depend upon the system। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस चार्जेस। अभी दो चार्जेस थे और पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी की जीरो है या नहीं वो भी हमें नहीं पता। सो इफ पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी इज नॉट जीरो, देन आल्सो इट डजंट अफेक्ट मच, क्योंकि हम जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं दैट इज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज नॉन जीरो, इफ इट इज नॉन जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? k q1 q2 by r plus u infinity। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 k q1 q2 by r plus जो भी है। Now can calculate difference, क्योंकि हमें इंफिनिटी तो पता नहीं इंफिनिटी क्या है, पे कह सकते किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में, एंड देन इफ वी चेंज समथिंग potential energy in the system, change in potential energy of the system। change का मतलब always final minus initial। potential energy of these two charges q1 q2 जब वो finally suppose r2 distance पर है, minus potential energy when they were a distance of r1। So you apply this formula for it, so k q1 q2 by r2 plus u infinity minus when they are at a distance of r1, then k q1 q2 by r1 plus u infinity। So whether infinity is potential is zero or not, since we are interested only in getting the potential energy, u infinity will always get allowed। So change in potential energy or difference in potential energy is independent of the reference point। potential energy कहीं पर भी zero हो सकती है। change in potential energy does not depend upon the reference position। does not depend upon the reference of potential energy। जीरो हम कहीं पर भी ले सकते हैं, या जीरो हमें नहीं भी पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। then also the change in potential energy will be same। it is independent of the choice of origin or independent of the choice of zero potential energy point। potential energy is a scalar quantity और potential energy हम कभी भी absolute नहीं कैलकुलेट कर पा सकते किसी भी चीज की, क्योंकि हमें इन्फिनिटी नहीं पता, हमें स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं हमें नहीं पता। सो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ एनीथिंग, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनीथिंग इज नॉट नोन। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आने से पहले
इसी रिवर्स में आने से पहले कहाँ थी, दैट इज नॉट नोन। दैट्स व्हाई इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी नोन नहीं है, हम केवल और केवल उसको अज्यूम कर लेते हैं फॉर द फाइनाइट चार्जेस। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट प्लेट, इसके लिए इन्फिनिटी को हम जीरो पोटेंशियल रखी, वो चार्ज खुद इन्फिनिटी तक है। The charge itself is still infinity, हम वहाँ पे potential energy को zero assume नहीं कर सकते। Potential energy of these two charges Q1 Q2 at a distance of r. अगर दो से ज़्यादा charges हों, there are multiple charges. Electrostatic potential energy of system of charges. System का मतलब not just 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी charges अगर हमें उनको ला के infinity से किसी position पे रखना है, then the total work done bringing all those charges from infinity one by one। तो हम अपनी कैलकुलेशन के easy कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं। सपोज अगर हमें 3 चार्जेस ला के रखने हैं, Q1 और एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखने हैं, Q1 Q2 Q3। तो हमें ऐसे को 3 चार्जेस को ला के एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखना है, Q1 Q2 Q3। the total work done bringing all the charges from the current position, this is defined as potential energy of the system. The total work done in bringing all the charges from infinity. Total work done in bringing all the charges from infinity to the current position. Without an acceleration. सारे चार्जेस को इन्फिनिटी से करंट पोजीशन तक लाके रखते हैं, जितना वर्क डन करते हैं, that work is defined as potential energy of the system. Without an acceleration is defined as electrostatic potential energy. ठीक है, so चार्जेस Q1 Q2 Q3 हो गए। सपोज हम उनको इन्फिनिटी से ला के यहाँ पर रखें, देन जितना भी वर्क करेंगे, दैट होल अमाउंट ऑफ वर्क देन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। राइट, नाउ टू कैलकुलेट दिस हम फिर से वही यूज करेंगे लॉजिक कि पहले हम Q1 को लेके आए, द वर्क डन ब्रिंगिंग द वेरी फर्स्ट चार्ज विल ऑलवेज बी जीरो। फिर Q1 से R1 डिस्टेंस पे सेकंड चार्ज को लेके आए, सो Q2 को Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा बिकॉज वन इज ऑलरेडी देयर। फिर जब Q3 को लेके आएंगे तो उसके ऊपर दोनों का फोर्स लग रहा है, 3 के ऊपर 1 का भी फोर्स लग रहा है और 3 के ऊपर 2 का भी फोर्स लग रहा है, सो दैट विल बी द टोटल वर्क डन in bringing the charges from infinity to their current position. Q1, Q2, Q3. The work done bringing Q1 is 0. The work done bringing Q2 against Q1 is W21. The work done bringing Q3
against Q1 and Q2. So it will be 3 का 1 के against plus 3 का 2 के against. So system की potential energy we can calculate with this. One by one charges को assume कर लें that we are bringing the charges one by one. The work done in bringing the very first charge is always zero. W1 का तो zero हो गया. 2 का 1 के against plus 3 का 2 के against plus 3 का 1 के against and so on. ऐसे किसी भी सिस्टम में जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं सिस्टम की तो उसके पेयर्स के वर्क डन पेयर्स को बनाने में जो वर्क डन आएगा और पेयर्स के लिए वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पेयर. Potential energy of system is always potential energy of all possible pairs of a system. Ultimately, that will become the formula for potential energy. किसी भी n number of charges के system में अगर हमें total potential energy निकालनी हो, then we can use this method. The total potential energy of the system is always sum of potential energy of all possible pairs. System की potential energy उसके अंदर के जितने भी pairs हैं sum of potential energy of all the possible pairs of the system. सिस्टम के अंदर जितने भी पेयर्स होंगे उन सारे पेयर्स की एनर्जी का समेशन दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब पेयर्स यहाँ पे तो केवल 3 चार्जेस थे, तुमने काउंट कर लिया दैट देयर आर 3 पेयर्स Q1 Q2 Q3 Q4 and Q3 Q1. But if suppose there are more than 2 charges, more than 3 charges, तो उनको काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा. वी कैन नॉट काउंट इट. उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हम पहले टोटल नंबर ऑफ पेयर्स को ही कैलकुलेट कर लें एंड देन वी विल लोकेट देम ऑन द एक्चुअल डायग्राम. टोटल चार्ज अगर सपोज n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस और उनको हम लेके कोई सिस्टम बना रहे हैं. If there are n number of point charges, so total number of possible pairs, total number of pairs out of n charges. NC2 और NC2 का हो गया n into n minus 1 by 2. n चार्जेस अगर हैं तो उसमें पेयर्स होंगे n into n minus 1 by 2. पहले हम नंबर ऑफ पेयर्स को अलग से कैलकुलेट करके and then we locate that pair और उस पेयर की डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में, and then from that formula we can get the potential energy of the system. Right, so for example, suppose there are 4 charges at the corner of a square. Calculate the potential energy of 4-point charge system. Keep at the corner of a square as shown. Right, there are 4 charges at the corner of a square. पहले हम locate करेंगे total number of pairs कितने हैं. How many number of pairs are there? n की वैल्यू 4 हो गई, so total number of pairs is n minus 1 by 2. 4 into 3 by 2, which is 6 pair. इसमें हमें total 6 pair identify करने हैं. Through these charges, there are 6 number of pairs will be formed. 4 तो side के along हो गए. 4 pairs are along these sides 1 2 3 and 4 और 2 हो गए इसके diagonal के along. Diagonal की length होती है a root 2. So total energy of this system, energy of each pair along this side
ऐसे 4 पेयर है प्लस एनर्जी ऑफ टू डायगोनल्स energy of the two pairs along the diagonal. So 2 K1 K2 divided by R multiplied by 2. Four side length और दो diagonal के along total number of pairs are 6. So हमें उन 6 pairs को locate करके we have to add the energy of all pairs and then we add them. Right, understood? बेटा समझ आ रहा है? Yes, sir. The example, suppose this is Q, this is 2Q. What charge should be kept at point B so that the net potential energy of the system is 0? Find Q dash so that the total potential energy of system is 0 or the total work done in making that system becomes 0. Total potential energy of the system becomes 0. एक पॉइंट पर हमने कितना चार्ज रखते हैं so that the total potential energy of that system becomes 0. How many pairs are there? How many pairs will be there? इस केस में pairs कितने होंगे? How many pairs will be there in this case? You have it, मैदान में. Yes, how many pairs are there in this case? How many charges are there? N is how much? How many charges are there? क्या हो गया? कोई है नहीं है, कोई आंसर नहीं कर रहा है. How many charges are there in this case? 3. Total number of charges 3. Total number of pairs will be 3 into n minus 1 by 2. So total number of pairs कितने बन रही है यहाँ पर? 3. और हमें उन सबकी एनर्जी को ऐड करके 0 करना है. First pair will be AB, second pair will be BC and third pair will be CA. तीनों की एनर्जी का समेशन. Potential energy of AB plus potential energy of BC plus potential energy of C into A, that should be 0. सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है उसके अंदर के जितने भी पेयर्स हैं उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी का समेशन. Sum of potential energy of all the pairs. Potential energy of AB plus potential energy of BC plus potential energy of CA. All that summation must be equal to 0. That is the condition here. 3 charges हैं इसलिए 3 pairs होंगे. A और B की एनर्जी हो गई K Q1 Q2 by R. B और C की एनर्जी K Q1 Q2 by R. और C और A की एनर्जी हो गई K Q1 Q2 upon R. This should be equal to 0.
total potential energy of that system is zero का मतलब ये भी हो सकता है other word में what charge should be kept at this point C, point B so that no work is done in making the system. No work is done in making the system means total potential energy becomes zero. Right? तो क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है या कोई आंसर नहीं करना चाह रहा है या फिर क्या बात? Is it clear? सक्षम हाँ जी समझ नहीं आ रहा है? सर आ गया Okay. समझ आ गया तो अगला करके दिखाइए. Find the total potential energy of 8-point charges kept along the corners of a cube. क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, so total 8 point charges are kept at the corners of a cube of side length A. What is the total amount of work done to bring this charges from infinity? Or what is the potential energy of the system? और अल्टरनेटिव वर्ड होता है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी कि इतनी एनर्जी अगर हम बाहर से प्रोवाइड कर दें same amount of energy is supplied from outside then charges will go back to infinity. If the same amount of energy we provide from outside then the charges will go back to infinity. So we have to now calculate that total amount of work done, the total amount of work done in making the system or destroying the system. जितना सिस्टम को बनाने में हमने वर्क किया है उतनी एनर्जी अगर बाहर से प्रोवाइड कर देंगे same amount of energy provided from outside then what happens, all these charges will go back to infinity. So, अभी यहाँ पे टोटल 8 चार्जेस हैं. 8 चार्जेस है मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हो गए 8C2. Total number of pairs will be 8C2, 8 into 7 by 2, that is 28. So total there will be 28 such pairs. 28 pairs की एनर्जी हमें लिखनी है और उन सबका ऐड करना है. कहाँ पर है 28 pairs? We need to identify those 28 pairs. क्यूब में टोटल एजेस कितने होते हैं? How many edges are there? How many edges are there in a cube? क्यूब में टोटल साइड्स कितनी होती हैं? टोटल एजेस कितनी होती हैं? Anyone? How many edges are there? एक क्यूब में कितनी 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 लाइंस होती हैं, कितने एजेस होती हैं? What is the total number of edges in any cube? या थोड़ा आंसर करोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो 12 फिर. How many edges are there? Yes. 12
12. So there will be 12 edges along the pair. So इस 28 में 12 तो हो गई edges के along. ठीक है. एक edge के along हो गया K Q1 Q2 by R. Right. बाकी कहाँ पर है? Total हमें 28 pairs identify करने. Where are the remaining pairs? डायगोनल्स में। Diagonals में. किसके diagonals में? कौन सा diagonal में? Face diagonals. Every face has two diagonals and there are 6 faces. So हर एक face में दो diagonal होंगे, इसलिए total हो गए 12 face diagonals. So 12 pairs along the edges, 12 pairs along the face diagonal और face diagonal की length हो गई a root 2. 12 plus 12 24. अभी भी पूरे नहीं हुए. There is still four pairs remaining. वो कहाँ पर है? Where are the remaining 4 pairs? बाकी कहाँ पर है 4 pairs? Along the body diagonal. There are 4 body diagonal. ऊपर के corner को नीचे वाले corner से join करने वाले. There are 4 body diagonals. 12 edges, 12 face diagonals, and the remaining 4 pairs are along the body diagonal. So plus 4 body diagonal की length देती है K Q1 Q2 by R, and R becomes a root 3. KQ square by A, there are 12 pairs along the sides, 12 pairs along the face diagonals, and 4 pairs along the body diagonal. टोटल हो गया 28 पेयर. जैसे किसी भी सिस्टम में हम पोटेंशियल किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं by using the total number of pairs present in that system. Right? Okay. Potential energy of any system is total work done in making that system. Potential हो गया, potential energy हो गई. Similarly, potential energy of 2 charges, potential energy of n number of point charges. Similarly, you can write the potential of any system of charge. Potential energy is the work done in bringing those charges infinity से उस सिस्टम तक उस पोजीशन तक चार्जेस को लाके जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है. That work is defined as electrostatic potential energy. Next is electric potential or electrostatic potential due to a charge.
So पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस. अभी पोटेंशियल क्या है? सपोज हमने कहीं पर एक चार्ज रख दिया Q. दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q kept at सेंटर पॉइंट. ये चार्ज अपने चारों तरफ अपनी फील्ड क्रिएट कर लेता है. दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस. इस सराउंडिंग स्पेस के हर एक पॉइंट पर इसका इफेक्ट है. उस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट. दिस चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस. और किसी एक पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसको कैलकुलेट करने का, पता करने का तरीका क्या होता था? हम वहां पर कोई यूनिट चार्ज रखते हैं, चार्ज क्यू नॉट, एंड देन वी कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. Force acting per unit test charge kept at that point is electric field. ये एक तरीका था उस पॉइंट पे उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, उस पॉइंट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का. दूसरा तरीका होता है किसी भी चार्ज के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट तक. एक तरीका था वहां पर हमने चार्ज को रख दिया, उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Second is the total work done in bringing the charges from infinity to that position. Infinity से उस position तक लाकर रखने में कितना work करना पड़ेगा. That work done per unit charge is defined as potential. Right? So electric potential is defined as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका है? इस पॉइंट P का है. किसकी वजह से? Q की वजह से. Q की अपनी रीजन में Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर एक पोटेंशियल होता है, एंड that potential is determined by the charge that creates the electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q की है. सो Q की वजह से उस पॉइंट P पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, एंड दैट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज the work done in bringing a unit positive test charge. In bringing a unit positive test charge from infinity to that point. From infinity to its current position. From infinity to that point, not current position. अभी तो चार्ज की कोई पोजीशन है नहीं. From infinity to that point without an acceleration. तो यहाँ पे भी दो चार्जेस नहीं, यहाँ पे एक ही चार्ज है Q, और उसके चारों तरफ उसकी फील्ड क्रिएट हो चुकी है. उस फील्ड के हर एक पॉइंट पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Electric field strength is defined as force acting on a unit charge. Electric potential is defined as work done in bringing a unit charge. इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक बिना एक्सलेशन के चार्जेस को लाने में जितना वर्क डन करना होता है, work done in bringing unit positive discharge from infinity to that point without acceleration is defined as electric potential. Is defined as electric potential of that point. पोटेंशियल किसका है? किसी पॉइंट का है. और पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं? V is defined as work done per unit charge, W upon Q naught. और हमने इन्फिनिटी से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब वहां पे पोटेंशियल भी जीरो. पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज assumed to be zero. It may or may not be zero. It may or may not be zero, but we can assume infinity to be a zero potential for. We can assume infinity to be a zero potential for all finite charges. Finite charges like point charges, line charges. Point charges के लिए, line charges के लिए, we can assume that it is at infinity. Infinity is at zero potential. Infinity से अगर Q naught charge को लाने में work done होता है W, then work done potential at any point is, so potential at any point is defined as W upon Q naught, assuming potential at infinity to be zero. Assuming electric potential at infinity to be zero.
इसको अगर हम infinity zero potential पर नहीं है तो v minus v infinity that will be written as w upon q naught. If infinity is not at zero potential, again infinity equals zero potential पर मानना. If infinity is not at zero potential, right? Potential is work done in reaching till that point by a unit charge. किसी चार्ज की विसिनिटी में चार्ज के पास यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है दैट वहां पे हम कोई चार्ज रख नहीं रहे, देयर इज नो चार्ज, जब उस पॉइंट की डेफिनेशन उस पॉइंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का तरीका है. सो टोटल वर्क डन तो हो गया k q नॉट बाई r डिवाइडेड बाई q नॉट वन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एट ए डिस्टेंस r. Electric potential due to a point charge at a distance r. Electric potential due to a point charge. एक चार्ज की वजह से it will be k is 1 upon 4 pi epsilon naught r. This is the formula for electric potential due to a charge. And इसके लिए हमने infinity को zero potential energy पर assume किया हुआ. Assuming potential energy at infinity is zero. अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो नहीं होगी तो फिर हम उसको v माइनस वी इन्फिनिटी पुट कर देंगे. Since it is work done per unit charge, so joule per coulomb, and the same is called volt. SI unit of potential will be joule per coulomb or volt. Potential का formula kq by r, since it is a scalar quantity. Again, for any positive charge, it will be positive potential. For negative charge, it will be negative potential. This is a scalar quantity. It will be positive for positive charge. It will be negative for negative charges. Electric potential is again for a single point charge kq by r. अगर potential energy zero है तो infinity पे. Otherwise, it will be kqr plus potential infinity. If potential energy at infinity is zero, then if potential energy at infinity is if potential, not potential energy, if potential infinity is zero. So again, when we calculate the change in potential or potential difference, दो points के बीच में the potential difference again does not depend upon the choice of origin. Potential difference again does not depend upon the choice of the reference. Zero potential energy हमने कहाँ पर लिया? Choice of origin or reference. So like V2 minus V1, it will become KQ by R2 plus V infinity minus KQ by R1 plus V infinity. V infinity gone. So V2 dash minus V1 is V2 minus V1. Infinity zero हो या किसी और point पर zero, potential difference always remains same, just like the potential energy remains same. Potential energy and potential are related. Potential energy था उस पूरे चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, और potential होता है यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है. The work done bringing a unit charge is defined as potential at that point. The work done in bringing the whole charge to that point is defined as potential energy, right. So ये हो गया electric potential of a charge. This is potential energy of a charge.
potential energy of two charge system, potential energy of n point charges system. Right. ठीक है, so potential हो गया, potential energy हो गया, potential energy is total work done in bringing potential energy in bringing the potential energy is total work done bringing the charge, potential is work done bringing the unit charge. Very nice. Hmm. ठीक है, understood. I think this is the potential and potential energy. Potential of a charge, potential due to a charge, and potential energy of a system. Right? ठीक है, बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं. We'll have the class on Friday then. For the पिछले वाले चैप्टर के जितने भी वर्कशीट्स थे उन सबको हम डिस्कस करेंगे in the Friday class. And first chapter is completely done, so you can start or you can do all the worksheet first, and then you can solve the NCERT and SL Aroda minimum till the next Friday, so that we can discuss. और जो भी आपके doubts हैं वो doubts है मुझे class के पहले ही WhatsApp कर देना. I'll include those doubts in the class itself. Okay then, thank you.